हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विस्टास टेक्स्ट बुक के। इससे पहले मैं फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, आप वीडियो देख सकते हो। तो जो फर्स्ट लेसन है विस्टास टेक्स्ट बुक का, द थर्ड लेवल, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर ये जो लास्ट में 3 क्वेश्चन है, ये दोनों ही फॉर्मेट में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। What do you infer from Sam's letter to Charlie? Do you see an intersection of time and space in the story? Do you think the third level was a medium of escape for Charlie? तो शॉर्ट आंसर भी और लॉन्ग आंसर भी दोनों ही तरह से ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देन द टाइगर किंग लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर foretell as soon as the tiger king was born? Who is the tiger king? Why does he get that name? How did the royal infant grow up to be? Question number 4, what did the Maharaja do when he had killed his first tiger? What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? Why did the Maharaja of Pratibandpuram wish to marry? Question number 7, how was the 100th tiger found? ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन से। हाउ डज टिशानी डोशी डिस्क्राइब her journey from Madras to the world's coldest, driest and windiest continent? How were the Himalayas formed? What is unique and typical about Antarctica? How does the author mean? What does the author mean by the journey to the end of the earth? How can you say that the students on ICE program has been a successful program? What do you know about phytoplankton? Important question है। How do geological phenomena help us to know about the history of humankind, and what are the indications for the future of mankind? The enemy lesson से जो important question रहेंगे, who was Dr. Sadao? Where was his house? Who was Hannah? Where had Sadao met her? Why does Hannah help the bonded man and wash him herself? What will Dr. Sadao and his wife do with the man? Will the Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? Important question रहेगा. What will Dr. Sadao do to get rid of the man? What did Dr. Sadao and his wife do with the man? शुड विजट हिट मॉमी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको वीडियो पॉज करके देख सकते हो, नोट कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ये सारे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे एचपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो। देन ऑन द फेस ऑफ इट लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये मैं शॉर्ट आंसर टाइप की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। हु इज़ मिस्टर लैम? How does Derry get into Mr. Lamb's garden? Why does Derry say people are afraid of him? How does Derry's face got burnt? Derry का चेहरा कैसे जला था? What idea does the story Beauty and the Beast convey? What is that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? Do you think Mr. Lamb's talk with Derry will change Derry's attitude towards life? What startles Derry in the garden and why? Why had Derry come into the garden? What happens to Mr. Lamb in the end? Lesson number 7, Evans tries an O level. What kind of person was Evans? What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? Will the examination go as scheduled? Why was Evans called Evans the Break? Will the injured McCleary be able to help the prison officers to track Evans? Important last lesson, memories of childhood से, how were the Indian girl dressed? Who was Judevan? What warning she gave to Jitkalasa? How was Jitkalasa found from her hiding place? How did Jitkalasa feel after her long hair had been shingled? Who was Bama? What does Bama say about untouchability when she was in the third class?
how much time did Bama take walking home from school? On the basis of your reading of the chapter, write about Jitkalasa and Bama. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। अब विस्तास टेक्स्ट बुक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये तो मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। द थर्ड लेवल से द टाइगर किंग से द स्टोरी टाइगर किंग इज a satire on the conceit of those in power. How does the author imply the literary device of dramatic irony in the story? Important question रहेगा। What is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? Then journey to the end of the earth के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why is the Antarctica is the place to go to in order to understand the earth present, past and future? Then take care of small things and big things will take care of themselves. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। What is the relevance of this statement in the context of the Antarctic environment? और ये वाला क्वेश्चन तो दोनों ही फॉर्मेट में इम्पॉर्टेंट रहता है, लॉन्ग आंसर भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर भी। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन से द एनिमी लेसन से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज द बेस्ट पॉसिबल इन द सर्कमस्टांसिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज़ द मॉरल इशू दैट द स्टोरी शुड विजर्ड हिट मॉमी रेजिस? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले, ये तो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों ही तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं। देन द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट विद disabilities is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? Discuss this reference to the story on the face of it. Then Evans tries NO level के जो important question है, on the basis of your reading of the story Evans tries NO level, what do you feel about Evans having the last laugh? Reproduce briefly in your own words Jitkala's experience in dining room, या फिर ये ईटिंग वाई फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। The two accounts that you read are based in two distinct cultures. What is the commonality of theme found in both of them? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये 17 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग आंसर टाइप कैटेगरी में रखे हैं। I hope you liked it, so keep watching and sharing my videos. Thank you.